Good afternoon, everyone. Welcome to the day 4 of grand inauguration of the university level online workshop on financial literacy organized by the NSS unit of Vidyalankar School of Information Technology associated with Mumbai University. This workshop is specially curated for today's. Good afternoon, everyone. Welcome to the day 4 of grand inauguration of the university level workshop on financial literacy organized by the NSS unit of Vidyalankar School of Information Technology. This workshop is specially curated for today's generation with the exemplar learning pedagogies in collaboration with SWS Financial Services Private Limited. Here are few instructions which we will all need to adhere. Kindly stay on mute. Do not unnecessarily unmute yourself. Please do not switch on your video. Keep an audio and video off for the smooth delivery of the webinar. We will also have a Q&A session where we shall try At the end, we will have a photo session where we shall ask to switch on their cameras. Feedback form will be sent at the end of the today's webinar on WhatsApp group. All are requested to fill it. We welcome you all again. Now I would request our NSS volunteer Siddesh Mane to introduce our speaker. Hello everyone, good afternoon. Welcome back to the day 4 of our webinar on financial literacy. We are honored to have respected Mr. Rajesh Krishnamurthy sir, and we are extremely happy to welcome you sir and your fellow participants. I, Siddesh Mane, on the behalf of NSS Unit of Vidyalankar School of Information Technology, welcoming you all to today's webinar of financial literacy, in which our speaker Mr. Rajesh Krishnamurthy sir will share his knowledge and guidance to us. Rajesh Krishnamurthy sir, country head, India Liaison Office. As country head of India Liaison Office, Rajesh sir oversees FPSB operations and strategy, grows FPSB certification program, and builds support to establish and grow the financial planning profession in India. With CFP certification has a symbol of excellence. Rajesh sir has 20 years of experience in Indian financial markets, spanning treasury management, institutional sales, private wealth management, and personal finance related technology platforms. Sir is also a member of National Institute of Security Markets and Investment Advisor and Retirement Advisor Examination Committees, and has served on the Securities and Exchange Board of India working group and committee to develop and update India's investment advisor regulations. Rajesh Krishnamurthy sir was an active volunteer not just of NSS when he was doing his junior college and graduation, but also a very active member of NSS alumni of his college even today. Very warm welcome, sir, and all the participants. All the participants are requested to keep their mics on mute. If you have any doubts or questions, you can post it in the chat box. All your questions will be answered at the end of the session. Without any further ado, I would like to continue with the session. Thank you, sir. Thank you, Suresh. I hope I'm audible. And yes, you are audible. Yes. Thank you. And you are able to see me at least for some time, before which then I shall move to the screen sharing. Thank you. So a very warm good afternoon to all of you. It's already warm in Mumbai, and I don't think it's a great occasion to be venturing out either, not just because of the sun, but because of the COVID scenario, right? So I'm hoping that all of you today are, are not just dialing in from the comfort of your home, but I am also wishing that you and your family members are all having good health today and in the days to come. So
let me first start by saying that it's a great privilege to speak to all of you youngsters. You are dialing in from so many places. Maybe you are beyond Maharashtra as well if you are not in town, and it's great to be back with volunteers of NSS. As the friend here who introduced me mentioned, I have myself been a very active volunteer of NSS back in my college. And more recently, a few years ago, when we had the ravaging floods in Kerala, many of us who were part of the NSS volunteer group then, in fact, we were a batch of almost, 10 years of alumni who got together to start doing flood related rehabilitation and rebuilding activities in the state of Kerala. Um, as you would probably guess with my accent, I am definitely a South Indian hailing from Cochin, uh, born and brought up there. And I came to Bombay in search of a career in the financial world. So that brings me to the next connection for today's afternoon, because I was told by Sri Raghuvi Radhikari that, Rajesh, you have to engage our students, engage their minds to help them decide what should they be doing with their careers should they decide to get to the financial services area. Having said the second connection, let me bring in the third connection. Um, I often used to, think that if somebody like this was there to tell us what we had to do when we were in college, probably we would have done a lot better in our life. Not that we haven't done well. I'm grateful that many of my friends are all in very established places across different countries in the world. But sometimes you need the right input coming in at the right time, and I think it's never a greater time than when you are just about trying to complete your graduation or your college life, and then planning to get into what everybody says, uh, becoming an earning member for your family, right? So it's a promotion from being a student to earning for one's family. It's a great feeling. However, I thought today, without doing too much of PowerPoint, I'll also try to share life experiences so that we can connect with how we plan our career, and also try and share some aspects of today's situation in our country, so that you can connect what you are experiencing in your life, what is the experience sharing happening here, and what is happening all around you. um, so it's a very interesting but a very simple concept, that a lot of things in the financial world are a lot related to common sense, and a lot of work that we do in the financial world is something that you and me, we get to see every day in front of our eyes. Maybe we don't think about it as much, but you can actually connect it. So I'll try to do that before getting too deep into career opportunities. But before that, many of you would be wondering, uh, who is this Rajesh Krishnamurthy? What is this FPSB? Why are uh, your teachers and your program officers inviting somebody like me to talk to you? There should be something that supports my presence here amidst all of you. So let me do a bit of a humble attempt to talk a little bit about who we are and what we try to do, so that you also get a point of view of from where do I come when I share certain perspectives from my life also with all of you. So please permit me to share my screen, and uh, you know I would be happy if I could get one or two comments on chat saying you can actually see my screen as I share it with you. So
I'm going to start sharing my screen, which is, please allow me to choose the screen. Thank you very much. Zoom sometimes, makes you go around. So this is my screen, and I hope you can see my screen now. Yeah? Yes, sir. Great. Thank you so much. So, so now you would all be thinking a lot of acronyms here. What is FPSB? Obviously, I represent an organization called the Financial Planning Standards Board. And today we are convened to look at some of the career opportunities that you might see yourself in India as you complete your college education, right? So a little bit about us before I start. And these are the few slides that might look like, a bit boring, but allow me to do this so that you know who we are. So if you look at us, we are a global not-for-profit organization, right? We are a non-profit. But what do we do when we say we are a not-for-profit organization? It doesn't mean that we don't engage meaningfully. It doesn't mean that we are doing charitable work. It just means that our objective is not to generate profit. Our objective is very different. And what is that? The objective is to make sure that people all around the world recognize the need to plan their tomorrow better. I'm trying to put it in very simple words. We want everybody across the world to understand that they need to plan their tomorrows better from a financial point of view, right? And we want to make sure that people who help them do that, and could be all of you, right, listening to what I'm saying, you could be one of them tomorrow, right, guiding people as to what should they do with their financial matters. We want everybody who is involved in such interactions to hold themselves to very high ethical standards. And so largely, if you look at what we try to do, on one side, we say we encourage people to think about their financial future, and we encourage people who help them to plan their financial future, achieve certain level of skills, hold themselves to very high standards, and also encourage them to continue to learn because this world is an ever-changing world. So that's what FPSP does. We are the Financial Planning Standards Board. Now, where do we operate? We are headquartered in the US, but I am in Amchi, Mumbai, talking to all of you from Malad. And we operate in 27 territories, stroke countries, and that's where we have a presence. So we also work with a lot of international organizations. And our objective, as I said, is that we want the public to benefit. We want them to benefit by availing services of professionals wherever they need them. And such professionals, we want to encourage them to, pick up. For example, the vision says that, we would like to keep our certified financial planner mark, which is the CFP mark, which you see on your screen, a standard of excellence. So we try to do that. Do we guarantee jobs? We don't do that. Do we guarantee X amount of salary after you do a program? We don't do that. What do? We make an honest effort to help students learn a few things that we believe will help them reach a level which definitely puts them above a lot many others who are in this area. And of course, keep investing in their growth and in their profession. So that's what we try to do. Next, just to give you an idea, how many such people are there in the world? Well, it's not as many people as who live in Malad, for example. So across the world, we have a little less than 2 lakh people who have taken the certified financial planning certification, the CFP certification. But despite the pandemic,
last year, we've seen a decent growth rate in the number of people who have, taken the certification. Just to give you an idea of where it is. But the next slide is what could be an eye opener for all of you, and which is why I wanted to talk a bit about FPSP and the spread of financial planning professionals in the world. So what I'm going to show you next is where are we as a country if you compare India, just looking at this profession. And I'm not going to restrict my conversations today only to the financial planning world. I'm going to talk to you about a whole lot of banking, financial services, insurance, a whole lot of things that are there in the financial services industry. But I thought this is a good base to start from. So just look at this little world map, and in this world map, you can see that when we closed 2020, India was a little less than 2,000 people who were certified financial planners. And when I say that, they are certified financial planning professionals, CFP professionals. So they have completed the exam, they have their experience, and then they've got the certification. That is what the number means. But have a look at some of the smaller countries. Okay? Have a look at countries like Malaysia, for example. If you remember some bit of geography that we've learned in school, Malaysia is a country which is 1/7 the size of India, almost. Yeah? Look at an even more smaller territory like Indonesia. Some of them actually have almost equal numbers, if not more, than such a number of safety professionals in such a huge country like India. And so most of the time, I'm sure you keep reading in the newspapers, you get to hear about comparisons between countries, and two emerging markets that are always compared in the world of finance is obviously China and India, right? So look at the number in China and look at the number in India. So 24,000, almost 24,000 people there who are certified, and just about 1/10 or 1/11 of that in India. So if you actually look at this, it kind of gives you an understanding of what is the future in financial services. Let's forget about what these professionals do. What exactly do they write? What is a financial plan? How do you write a plan? Keep all of that aside. Just look at this number as if this number represents the number of people who hold themselves to a certain standard and who have succeeded in clearing a relatively tough examination in the world of financial services, right? So that is where we stand as a country. Now, what does this show? It shows two things. One, we have a lot to catch up, right? We have a lot to catch up. Look at United States, for example. They have almost 90,000 such people. Look at Brazil, a country that is, from an economic point of view, we keep talking about how much we grow a lot more than some of these countries on the map. But look at us, right? So one is this comparison. The other is, okay, so if we need to grow, who is going to fill that gap? Who is going to come in and help? Who are going to add to these professions? And I can definitely say that I wouldn't be surprised if many of you would fill this gap in the years to come. So that's the other opportunity in the knocking in front of you. Having said that, let me just get to something very basic. Okay. There is one word which is a foundation to anything when you talk about a career in financial services. I don't know if you've heard this, but that one foundational word in terms of your own relationships with the financial world is trust. It is very, very important that if you are looking to make yourself a professional in this area, then you need to be somebody who is highly trustworthy.
You need to be able to communicate that you are highly trustworthy to other people who look at you, and you should conduct yourself in such a way that you are definitely trustworthy. So it's not just about talking, it's also about walking that talk. So it's very important that as students you understand that when you look at a career in financial services, you put this foundational word in your mind that you need to be extremely focused on trust. You being trustworthy, you being able to infuse that trust in other people, and making sure that this whole ecosystem is also trustworthy. Because the problems in any market happens when the trust is broken. So I'm sure, if some of you have watched the premiere yesterday of The Big Bull in Netflix, right? Or no, it came in Disney Hotstar yesterday, right? And before that, there was a book written by Madam Suchita Dalal. The book was called Scam, and there was a series in television which made The Big Bull famous. Not getting into whether the big bull is right or wrong. All I'm trying to say is that if you look at any such movie which connects India to the markets or the common public to the markets or to the financial world per se, there are many English movies as well. What you see there is that most often problems happen when the trust equation is broken. And that's the root cause of most issues. And again, what is unique about the financial services world? What is unique about this world is some of the or most of the decisions that you take when it comes to the financial services space are decisions where you don't get to know the result of that decision the day you take that decision. I will repeat. When you get into the world of financial services, you are engaged in a whole lot of conversations which connect with many financial decisions that one has to take. These decisions do not give you the result of taking that decision the very same time, or the day after, or the day after, or the day after. Some of these decisions actually will tell you whether you were right in taking that decision or not so right in taking that decision only after many years to follow. And this is what we call the moment of truth. Right? So we always try to tell people that when it comes to the moment of truth in the financial interactions and these kind of financial decisions, it is always somewhere far away in the future, which makes our job and our jobs, combined jobs, if all of you are going to be in financial services, I'm going to be a very happy man because we need a lot of you out there. Huh? We also need people to do, hardcore engineering. We need doctors to save our lives. All of that is important. But along with that, I'm saying if most of you are going this way, I'll be glad to see you here. But just to come back, so this is what drives the differentiation in people in the industry. Because when you know that your results will come only a long time later, then there can be two things. One, let's assume that we are giving an exam and we get our results maybe if you give a unit test, you might get it, probably the same day. Your teacher would give it back to you. If you give an exam in the school, which is like an internal annual exam, then maybe within a month, you get your mark sheet, you get your grade, you get your comparison. But what if you are giving a life exam, and the result will come after 15 years, after 20 years? How serious would you be when you are giving the exam? I mean,
result is going to come after 20 years. And you know, in 20 years, if you look back, 20 years ago, I was like you, listening to somebody like me, right? 20 years later, I am sitting here with gray hair, talking to you. So 20 years, a lot of things can change. So what if you have to give an exam where your results are after 20 years? Most likely, as humans, we are going to take it lightly because क्या फर्क पड़ेगा? Typical Indian attitude ऐसा नहीं है. It's a global attitude. Humanity में ऐसा चल रहा है कि if you don't know what's it right now and it's going to take 20 years to come, जो भी है अभी क्या फर्क पड़ेगा? That will be the approach, right? Now this causes a problem because both for the person who is taking the decision and the person who is here trying to guide that person to take that decision. So even the guide can take it easy, right? So if suppose I am guiding you, saying that, you know, why should you, if you have saved 100 rupees today, or you've saved 1,000 rupees today, if I'm going to guide you, hey, you know, Vibhavari, don't spend this money today. You take that money, Vibhavari, and put it here in this little bank, or take this money and put it in the post office, or take this money and buy, you know, a mutual fund, or take this money and put it in a peer-to-peer lending platform. All these I'm going to talk later, but I'm just telling you, with 100 rupees, you could put it in different places, or you could just spend that 100 rupees doing what? If you just buy one coffee from Coffee Day, the 100 rupees is gone, right? Or you want to go to Starbucks and buy a cup of coffee, you won't get it for 100 rupees, right? So very difficult decisions, right? Not about the 100 rupees, but imagine if there are many such numbers added to it, and imagine if, you know, you have a lot at stake in future, but you are not able to visualize that, then how would your decisions change? So what is happening is that today, as I'm speaking to you, I do not know if you've heard it from your parents, if you've heard it from your friends' parents, or you heard it in general when your, you know, elders are talking to each other. किसी ने बोला होगा मार्केट में इतना पैसा बनाया या इतना पैसा गवाया, या कोई बोला होगा कि अरे इतने साल पहले मैंने ये इंश्योरेंस खरीदी थी, इसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ, पूरा पैसा वेस्ट हो गया. या कोई बोलता होगा कि ये अच्छा हुआ कि मैंने ये खरीदा, अभी मेरा हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे ये पॉलिसी ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो पॉलिसी लिया था वो बिल भर दिया मेरा हॉस्पिटल का, तो मुझे कोविड के टाइम पे कोई भी परेशानी नहीं हुई, हॉस्पिटल गया, बिल इंश्योरेंस कंपनी ने भर दिया, मैं वापस आ गया. These are all stories you get to hear. But what if people did not experience the brighter side, but people had the wrong policies with them, जिसमें कवरेज था 1 लाख का और हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख. कवरेज था 10 लाख का, लेकिन आईसीयू में 15 दिन जाना पड़ा तो बिल आया 15 लाख रुपया, तो वापस गया 5 लाख घर से. करेक्ट. सो ये सब चीजें स्ट्रेस हो जाती है लोगों को, एंड ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आर देयर सॉल्यूशंस फॉर दिस? आर देयर प्रोडक्ट्स फॉर दिस? कैन यू गाइड पीपल फॉर on this decision? Of course you can. Are there products? Of course there are. Do you know them? Maybe you know them. Does everybody know them? For sure not everybody knows about them. So I'll give you some life examples also so that you understand what is it to be in financial services, how can you help people. But coming back to this trust. So you will do well if you focus on being somebody who can be trusted wholeheartedly. आंख बंद करके trust करो, you know, right? वैसा वाला trust. That's what we are talking about. But the reality is कि अगर आप सब लोग, मुझे कल बोला गया कि करीबन 400 वॉलंटियर्स रहेंगे ये कॉल्स में. तो मैं मानता हूं अभी हम 200 के ऊपर है, 225 221 लोग हैं. So even if 221 of us
join the financial services space, and we say that we all can be trustworthy. We are still only 221 people, right? We'll have to encourage a lot more to adopt this thinking. So होगा, change होगा, immediately नहीं होगा, but एक ना एक दिन होगा. So that is the bright side of thinking positive, right? एक ना एक दिन अच्छा ही होगा. So this is something that you have to carry back as you plan your career. Now, let me go back to my college, जहाँ से मैंने मैनेजमेंट किया था. लॉकडाउन के कुछ 5-6 महीने पहले मैं गया था वहाँ पे, ऐसे ही आप जैसे बच्चों के साथ बात करने के लिए, बोलने के लिए कि 20 साल पहले मैं इधर मैनेजमेंट कर रहा था, मैंने एमबीए के बाद मैंने क्या क्या किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा लाइफ में और मैं कहाँ पर हूँ, और आपको अगर करियर प्लान करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. तो मैंने वो टाइम पे बच्चों को एक असाइनमेंट दिया था, और मैंने बोला कि आप में से एक एक बच्चा या बच्ची आप ये असाइनमेंट कोऑर्डिनेट करो और आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे समझा क्या. सो ये था कि आपके पास अगर पेन और पेपर है, सो आई वुड एनकरेज यू, आप फ्री माइंड करके एक वेबसाइट है, फ्री माइंड फ्री माइंड अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक टूल मिलता है, उसका नाम है माइंड मैप. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दैट टूल बिफोर, कि आपने ये सुना भी है इसके पहले. अगर सुना है, यूज किया है, ग्रेट, आप यूज कीजिए. बट अ माइंड मैप इज नथिंग बट एक छोटा आइडिया से शुरू करो और उसके ऊपर आपको जितना भी आता है आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो. तो यहाँ से अगर हम एक करियर की चॉइस हम लोग सोचते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो वो हमारा शुरुआत है. दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करूं, या ये शुरू कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है. तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है हमको. पहले इधर जाने से पहले पहले क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, कंपनीज कौन है, इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, यहाँ क्या क्या कौन से तरह की नौकरी आती है, या कौन से तरह के प्रोफेशन में मैं खुद बन सकता हूँ प्रोफेशनल. सिर्फ नौकरी कर सकता हूँ कि मैं खुद भी अपने आप कुछ कर सकता हूँ. जैसे कि आपने सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वो सर्टिफिकेट लेने के बाद जाके नौकरी भी करते हैं. दोनों अलाउड है. सीखना तो एक ही था, लेकिन किसी ने डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, और किसी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खुद का कुछ नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं किसी दूसरे के साथ जाके काम करूंगी या करूंगा. राइट. सो दैट is a choice that is always going to be in front of you. Should I do it myself or should I join somebody? And sometimes what happens, people go this way and that way. Initially बोलते हैं कि नहीं, अभी तो जहां भी देखो स्टार्टअप दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. हाँ, कोई बोलता है कि इमीडिएट वे टू मेक मनी, स्टार्टअप खोलो, उसको फंडिंग मिलेगा, फिर बाद में अखबार में फोटो आएगा कि 1 बिलियन हो गया, 2 बिलियन हो गया, बाइजू हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. हाँ, वो भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट सब वहां पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सो हम लोगों को ज्यादातर सक्सेस देखने को मिलता है मार्केट में, अखबार में, बट फेलियर्स कम पढ़ने को मिलता है. ट्रूथ ये है कि हजारों लोग ट्राई करते हैं, उसमें से एक या दो सक्सेसफुल होते हैं, और वो सक्सेसफुल लोगों का नाम रोशन हो जाता है, उनका कंपनी का ब्रांड ऊपर आ जाता है, फिर उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, अखबार में आ जाता है इंफॉर्मेशन. तो आपको सुन के पढ़ के इंस्पिरेशन हो जाता है कि मैं भी करूं. बुरी बात नहीं है, यू शुड ऑल ट्राई. आई एम नॉट सेइंग नेवर ट्राई, यू शुड ऑलवेज ट्राई, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गो विच एवर वे, जॉब हो सकता है या आप खुद का कर सकते हैं. ये दो ऑप्शंस आपके सामने जिंदगी में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा. आज नहीं, ये कॉलेज के तुरंत बाद आपके सामने ये है,
बाद में भी यही रहेगा, उसके बाद भी यही रहेगा. These are the two choices you will always have. Third choice of course is काम भी नहीं करना है, खुद का भी कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है. वो भी एक चॉइस है. वो जो बोलते हैं ना रिटायरमेंट जो बोलते हैं, वो भी हो सकता है. बट ये चॉइसेस आपके सामने आएंगे और वही टाइम पे आपको ये चॉइसेस के सामने खड़े होके आपको वो पाथ चूज करना पड़ेगा. एंड कभी क्या होता है कि एक पाथ चूज करके आगे जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा, तो शायद आप सोचेंगे कि नहीं सक्सेसफुल नहीं हूं तो मैं मुड़ के यहाँ पे आ जाता. बहुत सारे ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जहाँ पे उन्होंने ये फ्लिप फ्लॉप किया है. खुद का किया, फिर काम किया, फिर वापस खुद का किया, फिर काम किया, अनसेटल हो गए. कोई बात नहीं. these are all यू नो वेगरीज ऑफ लाइफ. कोई नहीं बोल सकता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे, बट दैट इज द होप एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस. बट वो करियर डिसीजन जो आपके सामने आता है, दैट आई वांटेड टू रीइंफोर्स कि हमेशा आपके सामने रहेगा. तो ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको कि इमीडिएटली जाके कहीं छलांग मारना है. द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम ट्रस्ट के बारे में बात करें तो मैं बहुत सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि मेरे क्लास में दो ऐसे खास दोस्त हैं. दोनों डॉक्टर्स हैं. एक कार्डियोलॉजिस्ट है और दूसरा एक पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है. पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का, एंडोक्रिनोलॉजी मतलब कनेक्ट्स विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर वेरियस ग्लैंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट. कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है हार्ट का मैटर्स देखता है. और वो फुल फ्लेज सर्जन नहीं है, बट वो माइनर सर्जरीज भी करते हैं. मेरे क्लासमेट है. जब हम लोग मैंने बीकॉम किया, उन्होंने साइंस किया. मैंने एमबीए किया, वो वापस साइंस ही कर रहे थे क्योंकि वो मेडिकल का पढ़ रहे थे. मैंने जॉब करना शुरू किया, वो एमडी कर रहे थे. मैंने एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ले लिया, तो वो तभी वो क्या कर रहे थे, वो स्पेशलाइजेशन कर रहे थे. और फिर जब मेरा तीसरा जॉब मैंने शुरू किया तो वो एक डॉक्टर का असिस्टेंट बने हुए. तो ये सोचिए, उनके साथ जो स्कूल में पढ़े थे, वो 4 5 6 7 साल 8 साल उन्होंने नौकरी शुरू करके सैलरी लेके आना शुरू किया घर के लिए. बट यहाँ पर मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ. एंड इतना पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आज कार्डियोलॉजिस्ट का वो जो स्पेशलाइजेशन है वो आज उनके हाथ में मिल गया एंड उन्होंने कल सुबह से ऐसा पूरा सब डिटेल्स अपना घर के सामने लिख के उन्होंने बोला कि वर्ल्ड्स बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट. हाँ, उनके घर पे आओ, आई विल ट्रीट यू. ऐसा उन्होंने किया नहीं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हीं के जो सिटी वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं, मैं कोचिन से हूँ, तो कोचिन सिटी में जो आ, आ, क्या बोलते हैं रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया. क्यों? क्योंकि एकेडमिक लर्निंग और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क है. इसका मतलब ये नहीं कि एकेडमिक लर्निंग इज नॉट यूजफुल. वी ऑलवेज से दैट a career is a combination of theory and practice. A career is not a combination of only theory. A career is also not a combination of only practice. It is a combination, it is not an isolation of either. It is a combination of both. So दूसरी चीज जो मैं emphasize करना चाहता हूँ, before even I talk about financial services में आपका एक career, is there are many uh, roles that you can play in financial services, जहाँ पे you have to consciously tell yourself कि अगर मेरे पास ये सर्टिफिकेशन आ भी गया, अगर मेरे पास ये स्पेशलाइजेशन भी आ गया, या अगर मैंने डॉक्टरेट भी किया कोई सब्जेक्ट में,
बट प्रैक्टिकली अगर मैं कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, I might need to work with somebody to understand how it is applied in the real world. This is an extremely important thing. And I think what happens is that ज्यादातर ये ट्रस्ट वहां पर भी टूटता है जहां पे लोगों को पता नहीं कि प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या करनी चाहिए। देखिए, अभी इंट्रोडक्शन में बोला गया कि 20, 21, 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया का कंट्री हेड हूँ। मैं आज भी बोलता हूँ कि कभी कभार हमारे हमारे डेस्क से भी गलतियां होती है आज भी। क्यों? क्योंकि लाइफ हमारे सामने ऐसे चीजें लेके आती है जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी प्रैक्टिकली आपका एक्सपोजर रहे तो भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। एंड फिर वहां पे आप कैसे डिसीजन लेते हैं? सो एनी टाइम व्हेन यू आर इन दी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, या इफ यू थिंक कि मैं बहुत गलतियां कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आप कभी अपने आप पे इतना मतलब डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ कि यू शुड बी एरर फ्री। तो एरर इज ह्यूमन, बट जानबूझ के वो करना और गलती से करना, वो कोई तो बोलते हैं ना हम लोग, आई मीन फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गया। राइट? वो गलती से मिस्टेक होना ठीक है, बट जानबूझ के मिस्टेक करना, देयर इज अ डिफरेंस। सो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, as you watch a lot of these movies and you read up on what has happened in history, and even now when you read some of the newspapers and all, what happens is you get to hear कि गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है, जानबूझ के मिस्टेक किया गया है। And that is the reason why people start losing trust. And see, why am I coming back and I'm stuck on the screen for the longest time? It is because any conversation in career is irrelevant if you can't put that foundation in place. हम लोग ये भी करते हैं जब आप अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो पहले हम बोलते हैं कि आप पहले आप ये तो समझो कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होता है लाइफ में एंड वो कैसे लिया जाता है, एंड फिर उसके बाद सोचेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या मेरे पापा और मम्मी के लिए क्या अच्छा है बुरा है, whatever that may be questions, right? So coming back here, trust, please keep that and ये ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए जो भी आपको करना है, you should do, you should do. So that is how the number will change. अभी देखिए 68% कस्टमर्स जो हमने सर्वे किया ग्लोबली, ये इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल सर्वे की बात कर रहा हूं मैं, बोल रहे हैं कि trustworthiness is the most important aspect when I try to talk to somebody in terms of my financial decisions. But 66% लोग बोलते हैं कि मुझे ये पता नहीं whom can I trust. ये आज की दुनिया है, and this is real. I'm not making up this number. ये कोई WhatsApp फॉरवर्ड नहीं है, हाँ? ये स्पैम वाला मैसेज नहीं है, ये एक्चुअल रिसर्च है, अक्रॉस द वर्ल्ड हमने किया है, और दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द माइंड, read the mind of the customers, right? So it is important. So which means क्या है? So there is an opportunity, very clearly there is an opportunity. And देखिए जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने खुद के रिटायरमेंट के ऊपर।
वो जो फर्स्ट ये स्लाइड में जो ऊपर जो 3 बार है, दुनिया में अगर 100 लोग लेते हैं तो उसमें 50 लोगों का यही माइंड में वरी है कि रिटायरमेंट में मैं क्या करूंगा या करूंगी या हम क्या करेंगे. I don't know, maybe your parents are young parents. They may not end up retiring very soon, but you may have some relatives, you may have some friends whose parents are going to retire or have retired, or you may have neighbors who are retired people. तो बहुत सारे लोगों को अगर आप मिलेंगे जो रिटायर्ड है, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि खर्चा कम करो, उतना पैसा नहीं है, मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ या सकती हूँ, इतना मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अराउंड खर्चा उठाना and the ability or inability to take that kharcha. Now, when you have retired, which is what I'm saying, moment of truth is 20 years later. Retire होने के बाद अगर ये सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन मैं रिवाइंड करके बदल सकता हूँ या सकती हूँ? नॉट पॉसिबल. अनफॉर्चुनेटली आपके रिमोट में रिवाइंड बटन है, आपको जो भी देखना है रिवाइंड करके देख सकते हैं, बट आपकी लाइफ में रिवाइंड बटन नहीं है. So when you don't have a rewind button in your life, unless you have seen that English movie, The Curious Case of Benjamin Button, वो वापस जाता है. He, as the years go, he becomes younger. But फिर भी उसके पास फॉरवर्ड बटन नहीं है, वो छोटा ही जाता है, होता जा रहा है, राइट? सो वो काल्पनिक है, बट रियलिटी में क्या है हमारे सामने? आपके पास रिवाइंड बटन नहीं है. सो फिर आज का डिसीजन 20 साल के बाद अगर अच्छा नहीं निकला, तो you can't rewind and change your decision. So this makes financial industry extremely challenging, extremely challenging. So I will talk about that, and I will skip this one slide because ये जो slide है जो अभी आपके सामने लोड होगा, ये अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है. बस ये क्या है ना, this is the homework that was done by the students from my college. उनको मैंने ये वर्कशॉप करने के बाद उनको मैंने एक होमवर्क दिया था. तो ये जो इंडिविजुअल लाइंस है, दिस वन फाइल इटसेल्फ इज 50 MB इन साइज. ये एक पिक्चर, सो आई विल हैव टू जूम इन. Each color that you see is within the financial services, a place where you can see careers. I'll just show one small portion. I don't know if you can still see anything here. ये सेक्शन में जो दिख रहा है, एंट्री लेवल जॉब्स है, एसेट मैनेजमेंट है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, पीएफआरडीए है, कमर्शियल बैंकिंग है, प्रोजेक्ट फाइनेंस है. इट्स एन ओशन. मैं अगर आपके साथ 10 दिन भी बात करूं इसके ऊपर, तो भी मैं खत्म नहीं कर सकता. इतने सारे चॉइसेस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में. बट ये शीट जो बच्चों ने ही बनाया, आई विल हैप्पीली शेयर इट विथ योर प्रोग्राम ऑफिसर. बड़ा फाइल है, कहीं डाल सकते हैं, आप लोग सब डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसके बाद में ना आई विल जूम दिस एंड आई विल शो यू एन एग्जांपल, एंड ये फाइल में बाद में भेज दूंगा. बट आप फ्री माइंड डाउनलोड करके, ये बच्चों ने फ्री माइंड डाउनलोड करके उनके माइंड में जो था उन्होंने कोलैबोरेट करके बनाया है. दिस इज एक्चुअली अ माइंड मैप. इट इज नॉट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एन इमेज. ये उनका माइंड का मैप है, तो बच्चों ने ही किया. ओके, सो लेट मी कम बैक टू दैट लेटर, बट लेट मी गिव यू सम पॉइंट्स ऑफ व्यू. मैंने बोला आपको कि वी आर डूइंग अ वेरी टफ जॉब, राइट? व्हाट इज दिस? व्हाई आर वी सेइंग दैट दिस इज द टफेस्ट जॉब? द टफेस्ट जॉब इज बिकॉज मेनी कॉन्वर्जेशंस इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज कि आज सैक्रिफाइस करो, बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा. आई विल रिपीट. आज आप कुछ सैक्रिफाइस करो, बाद में आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड देयर इज अ होल लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन अराउंड नंबर्स. सो अगर आप देखेंगे इसमें 2 स्किल्स बाहर आते हैं. ऊपर का जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो माइंड के साथ जुड़ा हुआ चीज है. नीचे का जो लाइन है is all to do with your skills.
अगर आपने अकाउंट्स बराबर से सीखा है, मैथमेटिक्स बराबर से सीखा है, गिनती आपको ठीक से आती है, तो द सेकेंड पार्ट इज नॉट अ चैलेंज, वो आप सीख सकते हैं. इट इज अ क्वालिटेटिव स्किल, a quantitative skill. Quantitative skill, like how can you do advanced programming in Excel, for example? How do you do present value, future value of cash flows in Excel, for example? How do you write a cash flow in the first place? Can you do balancing of, uh, debit and, assets and liabilities? Are you able to balance them? Can you draw up a person's financial, accounts, final accounts at a personal level? मेरा खुद का P&L and balance sheet मैं बना सकता हूँ या सकते हैं. These are all quantitative skills. But ये सब करने के बाद वो नंबर का मैं क्या करूँ? The interpretation of that number, that is a combination of quantitative skill and creative thinking. So, for the longest time, I have spent my career in this industry connected to financial technologies. And I can tell you one thing for sure. If you learn a skill which is routine in nature, it is a repeatable process. Okay? जो आप काम कर रहे हैं वो repeatable process है. आउटपुट वही है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वही है. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री में असेंबली लाइन देखिए, एक बार ऐसा हथौड़ा मारना है और चला जाएगा, एक बार मारना है चला जाएगा, एक बार मारना है चला जाएगा. इट्स अ रूटीन टास्क, एक ही बार मारना है, डिफाइंड है, और चीज आपके सामने आता है, आपको जस्ट ये थप्पा करना है, जाएगा. वो एक चीज. दूसरी चीज, आपको एक एक टाइम पे जो मिलता है वहां पे यू हैव टू क्रिएट समथिंग. So for example, if this person is trying to make a hammer, the next time he gets iron, maybe he is told make a spade, or next time he is told to make something else, which means creativity bhi chahiye, raw material same hai. So the first example जहां पे repeatability है, जहां पे frequency defined है, और जहां पे मोनोटनी ज्यादा हो सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग, अब जल्दी से यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड अबाउट इट. अभी 100 बार करने का क्या, 2 बार आपके प्रोफेसर ने आपको बोला कि वही पैराग्राफ पढ़ो, तीसरी बार आपको ही, मतलब आई थिंक दैट इज हाउ आई वाज, आई डोंट नो अबाउट यू, बट थर्ड टाइम आई विल से सर बोर हो रहा है, सेम चीज क्यों पढ़ना है. बट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, अगर सेम चीज करते रहेंगे, उसको ऑटोमेट किया जा रहा है विद मशीन्स, with computers. So you have to always ask yourself when you're thinking about your career, you have to ask yourself, am I planning a career where what I am going to do is easily replaceable by systems? It's not easy. आज आप उतना इन्वेशन नहीं कर सकते हैं because आप दुनिया देख रहे हैं. But there can be many places where you can read. आप अगर, सब लोग आज गूगल में जाके सर्च करते हैं, यू कैन सर्च जो भी आपके मन में है करियर चॉइसेस, आप एक सिंपल सर्च कर सकते हैं. करियर चॉइसेस दैट विल डिसअपियर इन द नेक्स्ट 5 years, करियर चॉइसेस दैट विल डिसअपियर इन द नेक्स्ट 10 years, careers that will no more exist by the end of this decade. बहुत सारे रिसर्च आए हैं इसके ऊपर. सो जब आपके टीचर्स या मैं या जो बाकी प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं या बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के फ्रॉम SWS, ये सब जब सीनियर्स, हम सब लोग जब आपके जैसे बच्चे थे, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, हमारे सामने ऐसे सवाल आते ही नहीं थे. अगर कोई बोलता कि
कोई करियर बाद में नहीं रहेगा, हमको ये भी पता नहीं कि करियर है क्या सामने इन द फर्स्ट प्लेस, कि नहीं रहेगा। लेकिन आजकल एटलीस्ट मुझे ये दिखता है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्रिशिएट कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि उसका फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. So if I can tell you one simple thing, like I talked to you about trust, if I can tell you another simple basic thing when it comes to choosing a career, always plan your career in such a way that आपका दिमाग ज्यादा लगे and दिमाग बार बार लगे वो एक्टिविटी में. जब तक ये दो चीजें कॉम्बिनेशन में आती नहीं है, मोस्ट लाइकली कि आज नहीं तो वेरी सुन उसको ऑटोमेट किया जाएगा. Then you will have to find a new skill set, because you are a champion here, you are a champion at this, you are perfect in this, but it will change. Now I will give you another perspective. इंडिया में इतने सारे लोग हैं, लोग पूछते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा इंडस्ट्री है कि नहीं. बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इतने सारे बैंक्स हैं, इतने सारे ब्रांचेस हैं, सब लोग एफडी के पीछे पड़े हैं, सब लोग इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग म्यूचुअल फंड सही हो बोल रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, सब लोग वो कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों जाऊं इसके अंदर. इट्स अ रियल क्वेश्चन. इट इज सोचने वाली चीज है, मैं भी क्यों घुसूं. ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड देयर, राइट. बट यू नो देयर आर सम थिंग्स दैट आर चेंजिंग. फॉर एग्जांपल ये देखिए, कोविड तो है बट दैट्स वेरी डिफरेंट. कोविड इज अ पैंडेमिक, ये हमने देखा नहीं. बट एक्चुअली कोविड को अगर आप साइड में रखेंगे, वर्ल्ड ओवर देयर इज अ फीलिंग दैट शायद हमारा जनरेशन नहीं, बट आपका जनरेशन is likely to live to 100 years. Because of what? Because of the change in medical interventions, in medical science, in surgery, in robotic surgery, advancements in the healthcare space. So imagine if you have to live till 100. Can you actually think of retiring at 60? This is a real question. It's too late for many people who have already retired. 65, 70 years के आज जो हैं, ये क्वेश्चन हम पूछ नहीं सकते. शायद मैं ये क्वेश्चन अपने आप को पूछ सकता हूँ. I am 44. So now I have, maybe as per superannuation age, I still have 16 years left. But can I actually afford to retire at 60? What if I live for 100 years? So this, we'll take some foundational questions, okay, and we'll connect it to careers. Look at this and look at look at people all around you. लोगों को पैसा कब चाहिए? जब वो कमाते नहीं है. Like students, like आपको पैसे चाहिए because you are not earning. आपको फीस भरनी है, आपकी किताबें खरीदना है, आपकी लंच बॉक्सेस भरनी है, आपकी मेस फी भरनी है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं फॉर एजुकेशन. बट आप कमा नहीं रहे हैं, आपके पेरेंट्स दे रहे हैं. सो यू आर डिपेंडेंट. नाउ इमेजिन, where else do people need money? Would your parents need money? Yes. They would need money when kharcha is more than what they are able to earn. Yeah, they want to buy something, but they don't have as much money today, but they know that they can repay tomorrow, which is where we say there is a concept of loan.
सो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पेरेंट्स मुझे लोन नहीं दे रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे एज अ स्टूडेंट या प्रोटेक्टिंग नहीं, वो उनका फर्ज है, वो उनका फर्ज निभा रहा है. That's how we think. But in the financial world, I say we are getting an interest-free loan. Maybe the lender is not asking for repayment. Why? Because they love you, right? So they are not asking for repayment. They're not asking for interest because, again, they love you. So they don't want interest. But does HDFC Limited, does ICICI Banking, ICICI Bank Limited, yeah, L&T Finance Limited, yeah, Tata Finance Limited, जो भी IDFC First Bank, whatever bank you look at, do they love you? Give you a loan free of interest, no need to pay? कभी नहीं होगा, right? So we can't expect this from the world. So unfortunately for your parents, suppose they say, okay, घर खरीदना है. बॉम्बे में वैसे भी 50 लाख तो लगता ही है घर खरीदने के लिए. 50 लाख कोई भी सैलरीड पर्सन के पास इमीडिएटली नहीं रहता है. तो क्या करते हैं हम सब लोग, जाके एक होम लोन ले लेते हैं. So which means you borrow to acquire an asset. That's a financial decision. Now you look at the careers here. You could be working for the company that is lending, which is like an HDFC Limited. You could work for a company that is connecting the lending company and your parents, which means you are an intermediary. You are a loan direct sales agent. Or you could actually be a financial planner guiding your parents कि देखो मैंने कंपेयर किया, आपके पास सैलरी इनकम है, आप इतना लोन ले सकते हैं, आपका गोल्स लाइफ में जो भी है वी कैन सेटिस्फाई देम, आप जाके 50 लाख का लोन ले लो. मैंने कंपेयर किया, एसबीआई बैंक का देखा, आईसीआईसीआई का देखा, एचडीएफसी का देखा, एचडीएफसी बैंक का देखा, ये देखा वो देखा, ये 6-8 लोन मैंने इक्वेट किए हैं. उसमें से ये जो लोन है एबीसी बैंक का, ये मुझे लगता है कि लो इंटरेस्ट भी है और उसका टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा अच्छा भी है, तो आप ये ले लो. Now that is an advice. There is somebody in the middle who is giving advice to your parents as to how he should or she should or they should plan their home loan. You can be here. So you can be the lender, you can be the intermediary, and you could also be here as a customer making that decision. But you may not be having a career in financial services, but you are a consumer of financial services, right? So imagine, if you ask me, do we have people who need home loans in India? Of course. Do we have people who can compare and tell you what should be the right loan that you should take? Can you take? Should you not take? Will it be burden? Will it be a burden on your family, etc., etc.? Of course, you need the right guidance. So loan लेने में भी guidance चाहिए. Where else can you need a loan? So dependent है, loan चाहिए, but you आपको प्यार की वजह से interest free मिल जाता है, principal भी नहीं repay करना है. That's the best loan, right? इसको loan भी नहीं बोलते हम लोग, right? यहाँ पे जो है, that's a proper transaction between a borrower and a lender. अभी बाद का देखते हैं. We are talking about 100 years. आपने काम करना बंद कर दिया 60 years के बाद, 65, 70 years, 80 years तक खींच के गए. जो भी आपने, अब कब से शुरू किया आपने काम करना? 25 years से शायद आपने काम करना शुरू कर दिया. 60 years तक आपने काम किया, तो 35 years आपने काम किया. उसके बाद अभी 80 हो गया आपका उम्र, 35 years काम किया, 20 years आपने अभी विदाउट जॉब, आपके जो ये सेविंग है उसमें से जीना शुरू कर दिया आपने. मोस्ट लाइकली तब तक तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा बैलेंस, मोस्ट लाइकली.
बाद में आप एक सेशन ले लेना, अधिकारी सर है हमारे ग्रुप में, उनसे आप ये सब सेशन ले लेना कि ये कैसे हो जाता है। वो मोस्ट लाइकली 75-80 ईयर्स तक उनके पास बहुत सारे ऐसे गिनतियां हैं, वो सिखा देंगे आपको फिंगर्स में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बताएंगे कि ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो फिर लोन लेना पड़ेगा। 80 ईयर्स में अगर आप लोन लेने जाओगे, कौन देगा लोन? HDFC तो नहीं देने वाला आपको, कोई भी बैंक नहीं देने वाला आपको। वाई? बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, so there is no income stream to support the borrowing, so at that time you won't get a loan. So वापस you will have to turn back किसके पास? फैमिली, बच्चे, रिलेटिव्स, वो सब ने अगर हाथ ऊपर कर दिया तो शायद दोस्त, उन्होंने भी अगर हाथ ऊपर कर दिया तो क्या करेंगे? I don't know if you have read, I feel very sad when I read these news articles where students find their old teachers in a very bad state. There have been recent articles in the press where student को रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी अपनी टीचर मिल गई, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद उनके पास उतना नहीं था, फिर दे वेंट, पैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देयर इज नो चॉइस ना, पेट तो है, पालना तो है बॉडी को जितना दिन रहेंगे। So then you have no resort but to resort to what? Asking for alms, right? So this is very serious. But until you know this information, do you and me, do we even think about this? आज हम NSS, because of NSS we are having this conversation. अगर ये होता नहीं और आपको ये पता नहीं है कि you are likely to live till 100, how will your financial decisions be taken? With this knowledge, how will you take your own financial decisions and how will you encourage your parents to take their financial decisions? So where I come from is that the world is changing in various ways. There are different pressure points coming in our world, and it relates to both a top-down view and a bottom-up. So again, let me talk about careers. यही slide पे ये जो मैं कोट कर रहा हूँ, there is a research done by the World Economic Forum. Now, is that a career opportunity? Of course. Every slide I put, every information I share has a career opportunity built into it. And I keep telling, whenever you look at an industry or a space, look from both points of view, top down and bottom up. और मैं दोनों को आपको जोड़ के बता रहा हूँ कि ये कैसे इंटरप्ले होता है इनका। So ये कौन बोलता है कि आप 100 साल तक जिएंगे? ये ट्रेंड एनालाइज करना, इसका इकोनॉमिक्स के पीछे कैसा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी इसके ऊपर कैसा रहेगा, पेमेंट्स, सेटलमेंट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब कैसा होगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन चाहिए कि डिफाइंड बेनिफिट चाहिए पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट के अंदर, ये एक डिबेट है, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे का साइंस कौन लिखता है, इसका नंबर क्रंचिंग कौन करता है? आप कर सकते हैं, दैट इज अ करियर अपॉर्चुनिटी. So in the world of finance, you can even go there. That is, आप हेलीकॉप्टर से या स्पेसशिप से दुनिया को देख रहे हैं. This is a top down view कि लोग 100 तक जिएंगे, आप 100 तक, मैं 100 तक, नवाज जी 100 तक, वो मुझे पता नहीं. ऑन एन एवरेज ये दिख रहा है. This is another career. So you can be part of the World Economic Forum, you can be writing white papers, you can be crunching numbers, you can be modeling data. Financial modeling is also there.
Economic forecasting is also there. That is a career. Economist banna, that is also a big career. But how many people will become the chief economist or the chief economic advisor to the prime minister, or the chief economist in Reserve Bank of India? One person. But can you be one of them? Of course, you can dream of being one of them. That is a career opportunity, but that is not the only destination. You could be anywhere. You could be contributing in many ways. Now look at this top down and now look at it bottom up. So when I'm talking about you as a student, when I'm talking of your parents, when I'm talking about your grandparents or those who have retired, I am connecting this bottom up and saying, if you live for 100 years, how does it affect the family? So in the world of financial services careers, you can decide that I like to go top down. I like to be economist. I like to be a research person. I like to look at trends. I like to be part of forecasting. That is a completely different ocean to swim. Another ocean you can choose to swim is, ye dekho, I am seeing my parents. I'm seeing my teachers. I'm seeing my neighbors. I'm seeing myself. We all need to take the right financial decisions in life. So what I will do, I will join bottom up. I will be here where I'm connected to people. You can be. So in every single domain, you can decide to have careers top down or bottom up. That's another way of looking at careers. So without prescribing which career you should take, I'm just trying to tell you, how do you look at careers? And again, the first one that I told you, don't always think that career equal to job. Career can be a profession, a meaningful profession. And I mean, even your teachers, they are professionals. They are in the profession, in the noble profession of teaching. Of course, they may not have the capital to make their own school, their own classroom, put their own desks and get you there. So they are joining a school which is providing the infrastructure. But at the heart of hearts, they are professionals. They are trying to impart knowledge, and they are trying to make you better in your life, right? So that is a profession. Now, through knowledge, you can improve. Through skills, you can improve. And through decision making, you can improve people's lives. So again, understand that when I say micro level careers, you can be micro level career in decision making circumstances in each family. Let me give you another perspective. What we don't realize is that 9 out of our 10 workers are from the unorganized sector. Unorganized sector का मतलब ये है कि वहां पे कोई proper organization नहीं है. That is the meaning of unorganized. To look like this is simple English. But when I say proper organization नहीं है, क्या क्या organized नहीं है? कितना कमाएंगे? दिन का कितना wages रहेगा? ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड है कि नहीं, ग्रेचुइटी है कि नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है कि नहीं, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है कि नहीं. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखती है, वहां पे नहीं दिखती. स्टार्ट्स विद अ सिंपल मिनिमम वेज. So we have in our country we have a high amount of informal sector workers. अगर आपने हाल ही में जो नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, जो एक इंडियन थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये बताया था व्हाट इज द गुड इकोनॉमिक्स फॉर बैड सिचुएशंस, राइट? सो यू कैन बी अ करियर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. इकोनॉमिक्स, फाइनेंस बहुत जुड़े हुए हैं. Can be people like him
to visualize the world trends, come out with analysis, with research, and tell the world you got to change. You got to change the way you're thinking. You got to change the way you are looking at your minimum wages. You have to look at your inflation. You have to change this. You have to change that. ये सब बड़ी चीजें हैं. ये पहुंचने के लिए you need to learn quite a lot of things so that you are there and you can deliver. But this is what I'm saying. In a stream, you can go the research, analysis, and influencing the thinking of governments, of people, of companies. You could do that. That's a career option. The other part is why you should be careful. About the choices you make. The potential here is that we have a huge middle class. हम लोग सब middle class के लोग हैं. We are experiencing very decent wage growth despite COVID. Touch wood. Lot of industries work from home हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही है, growth हो रहा है. But there can also be many places where you don't see as much. But the middle class in general is growing. So we need a lot of people to help them, handhold them, help them with their decision making. So this is one aspect. Yeah. Now, I just wanted to bring in another aspect. In the world of finance, and this is something that a lot of people are now understanding later in life, in the world of finance, so we always say, na, health is wealth. वो सुनाई तो देता है हम लोग. Health is wealth, but you have health, you have wealth. So we are talking about wealth here, but let us equate to health. Usually when we talk about health, you and me, we talk about health where health is equal to some kind of physical well-being. That's how we usually think of health. Healthy आदमी है. But there is also a stigma attached to talking about mental health. There is a huge amount of science and research happening, which is connecting the mental health with physical health and financial health. So where I'm coming from, look for careers of the future. Okay, I'm trying to give you some points of view. It's not a prescription. I'm not here to prescribe. Yudhishthir ji, आप Prosin ले लो, Nawaz ji, आप ये ले लो. I'm reading out some of the names I can see on the chat. ऐसा नहीं है. I am just trying to say कि what are the filters you can apply when you think of careers. So let me just give you an interesting thing. There are a few countries in the world today who have appointed loneliness ministers. पता नहीं आपने इसके बारे में पढ़ा है कि नहीं. There are countries who have appointed loneliness ministers. Now ये इसका और हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या संबंध है आप पूछेंगे. ये कृष्णमूर्ति आके क्या बात कर रहा है. ये लोनलीनेस और ये करियर के बारे में क्या कनेक्शन है. आप ये सोच के देखिए. लोनलीनेस का वजह ये होता है कि ओल्ड एज में देयर इज नोबडी टू केयर फॉर यू. दिस इज द सिचुएशन. Old age में when there is nobody to care for you, you become lonely. Now, there can be another reason for loneliness. Irrespective of your age, if your mental health condition is not normal, people tend to kind of avoid interactions with such people. So, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को मेंटल anxiety होता है. These are all conditions of the mind. They are not, we can't, it's very bad to brand people as, surfira hai. For example, that's a common word we get to hear in local parlance. Uska to surfir gaya hai. Oh, the extremely colloquial word that I get to hear, yeda hai.
right? We use such kind of words, right? But actually, अगर आप सोचेंगे from a career point of view, this surfira, this yeda, this mental, this deranged, जो भी उनको हम बोलेंगे, which is basically is not good vocabulary, it should not be used. It's a condition. You have to accept that it is a condition. They are more and more they are away from the society. So, for example, think of Canada as a country. What they told their citizens was that, government ने छापा cards citizens को भेजा, बोला कि ये address है, आप ये कोई भी एक lonely person को एक आप सिर्फ एक postcard तो भेजो. How are you? We care for you. We are praying for you. May you be healthy, may you be happy. Simple wishes. रिसर्च ये बोला कि एक पोस्ट कार्ड मिलने से जो उनको मतलब हैप्पीनेस मिलती है, इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ देयर स्ट्रेस फ्रॉम द माइंड दैट दे आर लिविंग. नाउ व्हाट इज द कंडीशन हियर? कैन अ गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल द लोनली पीपल? नो. कैन द लोनली पीपल सपोर्ट देमसेल्व्स? Also cannot happen, because how will they earn if they have conditions? How will they earn? And what does it mean when countries are appointing ministers for this purpose? ये जिंदगी में पहले बार देखा है मैंने, आपने भी. हमने तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर देखा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देखा है, फाइनेंस मिनिस्टर देखा है, होम मिनिस्टर देखा है, प्राइम मिनिस्टर देखा है. लोनलीनेस मिनिस्टर 3 कंट्रीज में ऑलरेडी है, 4थे कंट्री में इंप्लीमेंट हो रहा है, 5-6 कंट्रीज और अभी अपॉइंट करने वाले हैं. So what does this mean? Globally, when more and more people are starting to live alone, you should also think that in future you may be living alone as well. You never know. I'm not giving bad news. Pardon me for sharing this, but I'm just trying to say that how do you plan? How do you visualize when you connect money decisions with respect to money with what is happening in front of you in the world today? Wouldn't you want to set aside more and more money, or encourage people to set aside more and more money, because somebody has to pay your bill to stay in a loneliness home? Government may not be able to support. And what if there was no vacancy in a government loneliness home? क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात. And therefore what I say is that think of 100 years, connect it with loneliness. It is a double whammy. There is a lot for us that we can do, right? अभी काम करेंगे तो ही 10-25 साल बाद, 50 साल बाद जब ये सिचुएशन इंडिया में आएगा, तो you all would have been part of that initial people who set this movement up, right? कि हाँ, मैंने सिखाया लोगों को कि ऐसा डिसीजंस लेना चाहिए मनी मैटर्स में. Let's look at what is the, despite all of this, what is the excuse? हाल ही में एक सर्वे किया था इंडिया में. The excuse given by a lot of people who were saying that they were feeling lonely was that they felt their family will take care of them. Joint family system is my retirement का security. It's not money. मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, वो मुझे संभालेंगे. That is what most people gave, and this survey was taken in 2020. It's not an old survey. So now, as a person, there could be 2 ways of looking at it. If you are micro in your career, you will try to say that this is the right brain thinking. It is an emotional thinking. But what is the rational thinking? Rational thinking is, there is research which says 100 years तक शायद आप रहेंगे. 60 years के बाद most companies से retire हो जाओ. तो 40 साल के लिए आपको आपका पूंजी बढ़ाना है. You have to create that corpus. तो 60 में अगर आपको corpus करना है,
अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा आफ्टर 60 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी अभी क्या करना चाहिए, राइट? So that is another aspect of you being part of this career opportunity. So it's all about, क्या बोलते हैं, at a micro level. If you look at your career, you are trying to say कि जो प्रायोरिटी है उसको मिस मत करो. जो आपके लाइफ में प्रायोरिटी है उसको आप मिस मत करो. दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इन योर करियर. अगर आप एक बैंक में जाएंगे, एक रिलेशनशिप मैनेजर बनेंगे, आपके पास एक कस्टमर है, आप बात करते हैं, वो यही चीजें आएगी आपके सामने. अगर आप एक लोन दे रहे हैं और एक कस्टमर आके आपसे बहुत सारा लोन ले रहे हैं, महीने में आके लोन ले रहे हैं, तो यही चीजें आपके सामने आएंगी कि ये कस्टमर को इतना सारा पैसा क्यों चाहिए. वो अभी तो भर सकता है, लेकिन ये क्यों इतना लोन लेके जा रहा है, इसका दुविधा क्या है. शायद प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड है लाइफ में, बैड डिसीजंस लिया फाइनेंशियल. सो दिस what is the core thing that I'm trying to say? Connecting the right and the left brain. ये आपके करियर में हमेशा आएगा. लॉजिक और इमोशन, इसको मिक्स करके ही लोग बात करते हैं. बट आपका जो करियर होगा फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये सेग्रीगेट करने का करियर हो सकता है आपका. कि ये सोना दादी ने दिया था, ये मैं बेचूंगी नहीं. दैट इज इमोशन. बराबर है, इमोशन करेक्ट है, बट वो अगर फाइनेंशियली वही करना है और कोई चारा नहीं है, तो वो उनको समझाने का जो काम है वो शायद आप करेंगे एज अ करियर पर्सन, गाइडिंग द माइक्रो. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, इज बिकॉज द अदर इश्यूज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल ऑफ दिस, वो तीसरा लाइन जो है, इज लो लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. These are all life questions. These are not, unique. These are fundamental questions everybody has to answer in life. And ये जो अवेयरनेस है बहुत कम है. इसके लिए आज हमारे जो प्रोग्राम हो रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक 200-300 ऑफ यू एटलीस्ट अवेयर दैट such things take place in the world. Huh? Now, as I said, you have a very important role to play. You have to be focused on how your mind works and how do you help other people's mind to work, right? तो एक सर्वे हुआ था, वेरी इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था. लोगों को पूछा गया कि जब आप रिटायर करेंगे, तो अगर आप 100 रुपए का सैलरी में रिटायर कर रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा लगेगा. सिंपल सवाल था. एक्चुअली I would have loved to do a quiz type of thing, जहाँ पे मैं poll कर सकता था and you could have taken the answer. But ठीक है, वो another time you will do it. But I'll give you the answers. थोड़ा let me not make it very boring. But रिटायरमेंट में जब ये सवाल पूछा गया कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना लगेगा, नेचुरली व्हाट विल पीपल से, मुझे अभी तो बस पकड़ के जाना नहीं है, ट्रेन पकड़ के जाना नहीं है, मेरा पास का पैसा बच जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा. तो रिटायरमेंट के बाद तो अगर मैं 100 रुपया कमा रहा, मतलब खर्च कर रहा था, तो उसके बाद शायद 70 होगा. I give you some interesting analysis there. So we're just looking at one small thing. फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, मैक्रो के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सो विल कम टू फाइनेंशियल लिटरेसी. बट ये जितना भी हम लोग एफर्ट मार रहे हैं, लोग यही बोलते हैं कि 70% ही चाहिए मुझे. बट रियलिटी में जब ये मेजर किया गया, तो इट वाज एक्चुअली 130%. यू नो व्हाई? It was because everybody thought they are saving, but what they did was, after saving, they started spending. Why? Because after you retire, for example, बोलते हैं ना, रिटायरमेंट होके भी आराम से है घर पे. अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ.
Okay, warning. But we always hear कि आराम से एक दो बियर मार के चिल कर रहा है लाइफ में, ये सब सुनाई देता है हम लोग, right? I'm trying to connect with real life conversations. Okay, don't mind me giving these statements, but these are real life conversations. But actually, what is happening? People are spending after they have retired because it is nothing but they saved, but they have delayed that spending. Then they did not spend. Now they are spending. Another thing that is happening, very interesting. Lot of people start looking at, पहले जब काम करते थे तो वीकेंड मिलता था, एक दिन मिलता था फ्रेंड्स को मिलने के लिए. अभी तो हर दिन मिल रहे हैं फ्रेंड्स को, सब लोग रिटायर हो गए. तो जब हर दिन मिलते हैं तो एवरी डे इज अ पार्टी डे. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. वी डोंट फोरसी इट. फिर मैं एक और एग्जांपल मैं बोलता हूँ. आई एम सीइंग दैट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. मेरे कम्युनिटी में जितने भी शादियां होती है, every person who is retired is present because that is an occasion for everybody to meet. तो कोई भी शादी मिस नहीं कर सकते अभी, बिकॉज रिटायर होके घर पे हैं तो सबको पता है कि अभी लीव का एक्सक्यूज नहीं आया, राइट? लेकिन शादी में जाएंगे तो तोहफा तो देना पड़ेगा, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा. यही सोचते नहीं है हम लोग. छोटी बात है, 100 रुपया तो 100 रुपया, 1000 रुपया तो 1000, 2000 तो 2000. 10 शादी में नहीं जा रहे थे पहले, अभी 10 के 10 शादी में जाना पड़ रहा है. 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000 हो गए. So what is happening is that a lot of people do not realize that there is a lot of spending that happens even after taking a break, taking it easy. So they end up committing what we call financial sins. अगर आप गूगल करेंगे, उनका कुछ वीडियोस भी है. फाइनेंशियल कॉमेडियन बोलते हैं वो खुद को, जेफ क्रिसलर. तो क्या बोलते हैं, we end up doing 10 sins and he sins high. So when you ask me what do you do if you want to have a career in financial services, I will say any career where you will avoid making these sins or make others avoid making these sins is a great career to be in the financial world. आप ब्रोकिंग कंपनी में हो सकता है, बट इफ यू आर मेकिंग अ कस्टमर ऑफ योर्स greedy and greedy and greedy, then you are committing a sin. That is not a career. Look at the 10th sin. It is greed. Outside pressure, very easy. I have seen that happen. मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, इन्होंने खरीदा है, आपने क्यों नहीं खरीदा? आपके जैसे 10 लोग खरीदते हैं, आप भी खरीदो. सो दैट इज आउटसाइड का प्रेशर आप कस्टमर के ऊपर डाल रहे हैं. बट उनका जो फाइनेंशियली सिचुएशन है और मेरा जो सिचुएशन है कंप्लीटली डिफरेंट होगा. It can't be one size fits all. Financial services, it is never like that. So we should not be doing this. So if you look at careers, if you think of, if I take up a job where I will help people not do this, that's a great way to think. See, I'm giving you ways to think about your career. I'm not prescribing your career path because you are 200, 300 people. I don't know what you have in your mind. I can give you filters. कैसे कैसे आप apply कर सकते हैं. Look at one more thing. I mean, sometimes ये सब बहुत confuse हो सकता है. People say मुझे एक या दो चीज आप बताओ. What can I do? Then I keep telling people, आप सिर्फ दो simple चीज पे focus करो आपका career में. If you can create a career on these two things. One, because of all this, we are in a situation where you have to make people decide to save. There is no option. There is no option. And I will tell you, the biggest competitor to financial services is not another financial services firm.
The biggest competitor to financial services firms, at least at a micro level, family level पे अगर देखेंगे, are all those people who make you spend. It is not that you should not spend. Don't treat me as somebody who says खर्चा मत करो, खर्चा मत करो. That's not what I'm talking. But if I have to live 40 years without a job, कुछ तो मुझे सेव करके रखना पड़ेगा. वो कहाँ से आएगा? आज ऐसा सिचुएशन है that मैंने भी ये गलती किया. I'll tell you my story. Okay. पहला जॉब मिला, पहला सैलरी मिला, बॉम्बे में आया था. फर्स्ट सैलरी जो आया, दो चीजें करनी थी. एक मैंने अपने खुद के लिए एजुकेशन लोन लिया था, वो तो भरना है, तो वो भर दिया. फिर फर्स्ट सैलरी है तो पापा और मम्मी के लिए कुछ तो भेजना है, तो वो भेज दिया. फिर वो जो बाकी का महीना है जो कैसे गुजारना है वो सोचा नहीं. जितना भी बाकी था मैं विजय सेल्स गया. मैं खुद की बात कर रहा हूँ. विजय सेल्स गया और बोला ये मेरा डाउन पेमेंट है, मुझे एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए विच कैन प्ले सीडीज. वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक. सो खुद का कभी म्यूजिक सिस्टम नहीं था विच कुड प्ले अ सीडी. एंड आई लव द क्रिस्टल क्लियर साउंड्स. वो म्यूजिक का भ्रम जो बोलते हैं वो है, आज भी है. बट म्यूजिक के वजह से मैंने क्या किया, वो जो जो भी बाकी था वो जाके मैंने डाउन पेमेंट किया. मैंने बोला विजय सेल्स में ये मेरा जॉब है, मेरा विजिटिंग कार्ड है, मेरा फर्स्ट सैलरी स्लिप है, ये मेरा डाउन पेमेंट है. और आई स्पेंड दैट एंटायर मनी, बॉट अ म्यूजिक सिस्टम विथ एन EMI फॉर द नेक्स्ट 9 months. Now, if I think about that, so it's a very तो मतलब आज मैं अगर वो डिसीजन में देखता हूँ तो मुझे खुद एक स्केल लेके मुझे खुद मारना चाहिए अपने आप को. बहुत गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया मैंने. बट दैट डजंट स्टॉप देयर. जस्ट टू ऐड ऑन, 6 months after I 6-7 months after I bought the music system, मुझे ये बोला गया कि शायद हमारा कंपनी विल बी बॉट ओवर बाय समबडी एल्स. तो हम लोगों का अभी तक 12 महीने हुआ नहीं, आपका जॉब कंफर्म नहीं होगा, शायद नहीं हो सकता. तो रिस्क है. तो मेरा तो एजुकेशन लोन भी है. तो मैंने डिसाइड किया कि जाके दूसरा नौकरी ढूंढता हूँ. सो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ फर्स्ट जॉब में, and I had to leave Bombay, go back, take a temporary another assignment which I had from campus, then come back again to Bombay. वो जाने और आने के बीच में क्या हो गया, ये एक EMI वहीं रह गया. 9th month लास्ट EMI. क्योंकि इधर तो सैलरी अकाउंट में 0 बैलेंस है, उधर तो मैंने चेक दे के रखा था. तो यहाँ से गया, पहुंचते ही मुझे याद आया. तो आई हैड टू गेट इन टच विद देम, टेल देम अरे वो चेक मत डालो, आई एम हियर. वो तो हो गया, वो 1-2 हफ्ते का मेरा काम हो गया उनके पीछे भागने का, चेक के पीछे भागने का, और बोलने का कि मैं इधर भरता हूँ, कोचिन में आ गया, मैं यहाँ भरता हूँ पैसा. वो अकाउंट अभी बंद हो गया. दैट वाज देन. सो व्हाट डज इट टेल मी? आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल डाउन टर्न्स इन लाइफ. जॉब जा सकता है, अभी तो शुरू किया, कैसे जाएगा, मन में था ही नहीं. आज हमारे सिचुएशन ऐसा है कि वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो हाउ डू यू मेक इट सिंपल फॉर पीपल? इफ दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू हेल्प पीपल एलिमिनेट दैट रिस्क. तो ये मैंने अपने एक फ्रेंड से सीखा है. In life there can be 3 choices, I mean three ways in which your life will go. एक है you will live your 100 years happy and healthy, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकेंड सिनेरियो इज आप जिएंगे 100 साल, लेकिन ये बीच में आज से लेके 100 के बीच में बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा जिंदगी में.
कभी नौकरी जाएगी, कभी अच्छी नौकरी मिलेगी, बोनस मिलेगी, विनफॉल गेन आएगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगी 5-6 महीने के लिए, आपको घर बैठना पड़ेगा, सब हो सकता है। या आप नौकरी करने के लायक ही नहीं बन सकते because of some problems. So for example, we keep telling that the most precious thing for a footballer is his feet. How much ever blessed you are, if you don't have that feet, you can't play your game. So for example, फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आपका ऐसा है कि बहुत दिमाग लगाने का काम है और आपको एक कंडीशन आ गया, कोई भी अर्ली ऑनसेट ऑफ पार्किंसन आ गया, अल्जीमर्स हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गया, या डिमेंशिया हो गया जल्दी से, या कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम हो गया, you can't work, you can't do it, you're physically fit but you can't deliver, क्या होगा? So that is that उतार चढ़ाव in life, but still you are living for 100 years. The third situation कि किसी को कुछ हवा नहीं, आज सो गया कल सुबह उठा नहीं, सडन, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है लाइफ में. You will live happy, healthy, without problems. You will have problems, but you will live all that way, and you will suddenly die. This is what I have learned from a person who is doing this for the longest time. Simplify करके हम ऐसे सिखाते हैं लोगों को. हर एक चीज में रिस्क है. One is the risk of living. There is a risk of living with health problems, both physical and mental, or with varying levels of income. कभी घर बेचना पड़ा बिकॉज इतना मतलब प्रॉब्लम हो गया कि घर बेचना पड़ा. एंड द लास्ट इज यू आर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, बट आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स होंगे, या आपका फैमिली रहेगा, आपके बच्चे रहेंगे, या आपके सिबलिंग्स रहेंगे जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका पढ़ाई का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो भी है. ये तीनों एस्पेक्ट्स में रिस्क है. ये रिस्क को कवर कर सकते हैं. देयर आर मेनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट कैन कवर ईच ऑफ दीज रिस्क्स. सो ऑल यू हैव टू थिंक इज दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ करियर, one, are you encouraging people to save, and the second, are you contributing to helping them eliminate these risks, or if you cannot eliminate these risks, are you helping them to cover these risks? Because some risks you cannot eliminate. Risk of death, loss of life, you cannot eliminate. You can reduce. How? By not going for adventurous sports, by not jumping off an aeroplane just for the sake of adventure. ऐसा सब eliminate कर सकते हैं. But other than that, you can eliminate that risk totally. But those you can protect by saying that if you are no more, then your life is covered by an insurance policy. If you are unhealthy, your unhealthy aspect is covered by this insurance policy, health insurance policy. If you have a car, then the risk of an accident to others and a risk of an accident to you and damage to your car is covered by a motor insurance policy. So insurance is there. सेविंग के लिए बहुत सारे हैं, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, ईटीएफ्स है, बॉन्ड्स है, एफडीज हैं, इतने सारे चीजें हैं. आप सीखते ही जमाना लग जाएगा, इतने सारे ऑप्शंस हैं. So now when you look at it, you have to focus on just these two things when you look at your career. And so where I'm coming from is that whatever you decide to do, you just make one. I started by saying, if I recap, I started by saying foundation क्या है? Trust. वो foundation रहना चाहिए. Then I gave you an example. आप टॉप डाउन भी देखो, बॉटम अप भी देखो, आपको करियर कहाँ पे जोड़ना है.
फिर मैंने बोला एक माइंड मैप का चीज बोला, मैं आपको भेज दूंगा, वो मैं आपको देख के आपको पता चलेगा कि बैंकिंग के अंदर क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है, इंश्योरेंस में क्या है, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी में क्या है, बिहेवियरल साइंसेस में क्या है। ये सब ये बच्चों ने ही बनाया और इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। तो आप वो देखिए, यू विल हैव अ पर्सपेक्टिव कि कहाँ कहाँ जा सकता है आपका करियर। फिर मैंने ये आपको बताया कि while you look at it, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, do you want to be where we are creating the product, which is manufacturers like या लोन देने वाले कंपनीज, या do you want to be in the middle, interacting with your customers and connecting them to these manufacturers. That is also a conscious decision, right? Whether you want to be at the end of this or whether you want to be in the middle of this discussion between the consumer and between the product provider. That is another conscious choice. Then another aspect I mentioned to you, always plan with uh, the perspective of how do you help people in mind rather than thinking how do you invoke the greeds or the sins in financial decisions. And now I mentioned to you that if you want to make very simple choices, then you can sieve it down to two things. I have to do this or I have to do this. You can do both also. You can help people save and make them decide to save. You can also help people eliminate or reduce the risks. Now, if you do this, you know, हम बहुत बार हमें ये बताया जाता है कि हमेशा जब भी आपके सामने एक सिचुएशन है, उसको बहुत बार आप यही क्वेश्चन पूछो, वाई 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 वाई। 5-6 बार अगर वाई पूछेंगे तो फाइनली आपको एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग बहुत लोगों के साथ करते हैं। कोई मुझे बोलता है, राजेश आई वॉन्ट टू डबल माई मनी, कुछ सोल्यूशन बताओ ना, कहाँ लगाऊं पैसा। ऐसे मैं इधर, मतलब मेरे पास एक मशीन है जो बोलेगा इधर लगाओ, डबल होके इधर आएगा। Doesn't mean कि you are senior in the financial service industry, you know how to double money. That is not seniority. So I tell them, okay, I ask my friend, why do you want to double your money? So ऐसा उल्टा सीधा बात करता है, दोस्त है ना, तो कैसे भी बात करेंगे हमारे साथ, राइट? वो बोलेगा तुम्हें क्या पड़ी हो, मैं ये करूं वो करूं खर्चा करूं, तुम्हें क्या पड़ी है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे पैसा बनाना है। मैं बोला समझता हूँ पैसा बनाना है, बट भाई यार बोला ना मुझे खर्चा करना है, तो मैं बोला सो व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड। तो बोलेंगे यार लोगों को लगना चाहिए कि मैं BMW में घूम रहा हूँ, या मैं मॉलडीव्स में गया वेकेशन के लिए, या लोगों को लगना चाहिए कि मेरे पास 3 BHK है, वॉट एवर दैट मे बी, राइट? सो यू आस्क व्हाई, यू से अरे वो तो चाहिए बिकॉज आवर फैमिली इज बिग यार, अभी 2 BHK में हूँ, 3 BHK तो चाहिए यार, यू नो बंकर बेड पे सो रहे हैं बच्चे लोग। अभी आया ना रियल रीजन, अभी आया। पहले तो बोल रहा था दुगना करना है पैसा, फिर बोला मॉलडीव्स, फिर बोला BMW, फिर फाइनली क्या बोला, बच्चे दोनों बंकर बेड पे सो रहे हैं, 2 ही बेडरूम है, दोनों बड़े हो गए, तो एक और रूम चाहिए, तो घर खरीदना है उसको, इसके लिए उसको पैसा दुगना करना, क्योंकि 3 BHK आसान से नहीं मिलता है और उसको लोन कम लेना है। ये सब बाद में समझ में आता है, राइट? तो जब वाई 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 पूछेंगे तो ही पता चलेगा, एक फर्स्ट इंस्टेंस में कभी पता नहीं चलता है, और कभी कभार ये वाई 7 बार पूछना पड़ता है, 8 बार पूछना पड़ता है, तभी आएगा बाहर। और द क्लोजेस्ट यू आर टू दैट पर्सन, द मोर डिफिकल्ट इट विल बी, बिकॉज इधर उधर घूम फिर के बात करेगा। So, in sum and substance, if I were to tell you, if you are looking at careers, you have to just keep one simple thing in mind. Trust तो है ही, that is the foundation. ये सब आपका decisions है, but outcome क्या होना चाहिए?
आपका ये जो करियर डिसीजन है, आप फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में आएंगे, तो व्हाट शुड बी द आउटकम? खुद को अच्छा करना है, यस यू शुड, ऑफ कोर्स खुद अच्छा करना है, बट ऑलवेज रिजॉल्व दैट मैं खुद अच्छा करूंगा, बट my resolution is that I will help my customer who is experiencing my delivery, whether I am in the middle or whether I am giving something, to achieve that life goal of his. That is what is most important. So a lot of people, when they talk about careers, खुद के बारे में बोलते हैं, खुद क्या करना चाहिए बोलते हैं. But my simple message to you, at least this has been my experience, you consciously program yourself in such a way that every interaction that you have when it comes to financial decision making, it could be a decision of loan, insurance, investments, or it could even be decisions around macro level कि इंडिया में ये पॉलिसी लेके आना है कि नहीं. As you reach seniority, you will get these questions also in front of you. You might be part of some working groups, you might be part of some regulatory groups, you might be part of some consultations. But whatever you are involved in, try to keep this point of view in mind. And I am a very strong believer. जो हमने पहले स्कूल में पढ़ा था, early days of school, हमको हमें every day we used to get one, you know what do you say, an English saying, you know, there used to be thought for the day. आज भी होता है thought for the day, हर एक स्कूल में मैंने देखा है. So one of the thoughts for the day has always stuck to my mind. What you sow, you will reap. So with that, let me conclude and let me thank each one of you for giving me a patient hearing, and thank you, you know, NSS fraternity of the college, the administration of the college, my friends who, because of whom the college got to know about me, both Adhikari sir and Kishore Kaliji. Thank you so much. And to everybody at, you know, the Vidyalankar Institute, my best wishes to all of you students. I'm sure you put your focus, you put your mind here, and you will sow what you reap. You will reap what you sow. As you sow, so you reap, right? So reap what you sow and sow good things. That's all I can say. All the best. Over to you. Thank you. Thank you, sir. Now I would request our Vice Principal, Vijay Gavde, sir, to come on board and speak for some few words. Hello. Yes, sir, you are audible. Yeah, good evening, all. And thank you, Rajesh, sir. I think all the students must have enjoyed this session. And Rajesh sir has explained very well with small and realistic and real life examples. I think students always like this type of examples because then they get connected with all the ideas which we want to impart. So thank you, Rajesh sir. And students, as sir has already told you about these various career opportunities in this finance field. So I think you all will take the benefit of this. And
it is not only that we should take the benefit, but we have to spread the messages, whatever we have got today, what ideas are given by sir, that we have to spread in our own community. That is, you are the students of different colleges. So in your own colleges, you can have discussion on these kind of things. Okay. So thank you all. Now would request our NSS volunteer, Netra Salve, to give a vote of thanks to our speaker. Thank you so much, Ravni. Good evening, respected sir, madam, and all the NSS volunteers. I exhibit my enormous gratitude and respect to Mr. Rajesh Krishnamurthy sir for being on board with us today. I extend my sincere gratitude and respect to management, trustees, and our principal, Dr. Rohini Kelkar ma'am, for the support provided by them. We wholeheartedly thank them. I also thank NSS Director, University of Mumbai, Dr. Sudhir Puranik sir, and NSS Director Mumbai, Dr. Satish Kolte sir, for providing us this opportunity. I am grateful to our NSS Program Officer, Professor Vijay Gowde sir, and Professor Harish Naula sir, and also to other associate professor, namely Professor Agnes Anthony ma'am, for the constant support and guidance. It is immensely gratifying to see such an overwhelming response from our attendees. Thank you. Now I would request everyone to kindly switch on the cameras for the photo session. Thank you, everyone. Thank you, everyone.